Yeah, 10 best forearm exercises. Yes, here by best, I mean my favorites. The first one we are going to use is this one. This is a normal lathi, but more like a bamboo. It is flexible also. This is traditionally used in Kalaripayattu. Now you might be thinking, what is the role of this lathi in a forearm conditioning or forearm workout video? Yes, it is directly connected. The lathi rotation or any kind of martial arts movement like this is very good for the forearms, and this is exercise number 1. And exercise number 2 is the underhand rotation. You can see, if you want to learn all these moves, I made separate video for double stick lathi rotation. You can see the video and learn these moves over there. These are one of the best exercises. And yes, okay, this is exercise number 3. Nothing but the combination of exercise number 1 and 2. That is the standard forward rotation mixed with the underhand rotation. ये आगे गया और ये उसी तरीके से पीछे भी ले लिया. ये देखो टैलेंट देख रहे हो मेरा. हाँ, this is very good for forearms as well as the shoulders and everything. Now for the next exercise, we need something more heavier because it's kind of, I will reveal which is the exercise. So यहाँ पे हमें चाहिए थोड़ा सा भारी वाला. I am using this Okinawa style Kobudo bow. You can use मोटी वाली लकड़ी या कोई लट्ठा. So the first one we are going to rotate it in anti-clockwise direction. Miss one and hold the next. Miss and hold. एक छोड़ दो दूसरा पकड़ लो, एक छोड़ दो दूसरा पकड़ लो. ये देखो बहुत आसानी से. And this one, this is the moment. This we are going to do from maybe 30 seconds or 1 minute. This will strengthen your shoulders, good for your wrist, everything. Good. We will do this for 30 seconds or 1 minute. Be careful and yes, fast. Yes. Next one, use the finger, use something heavy and do this, right? ये support के लिए अच्छा है. And from here we'll do this. Yes. Next one, Indian base. Hold it over here and यहाँ से उठाएंगे. ये यहीं रहेगा, एक हाथ पीछे and like this. Ah. Ah. Oh. Ah. Same thing, back side, right? 1, 2, 3, 4, 5. अभी बहुतों के घर पे ये नहीं होता, कोई बात नहीं. इसको आदर पूर्वक यहाँ पे रखने के बाद आप फावड़े से भी ये सीख कर सकते हैं. ये देखो, सेम थिंग यू कैन डू विद दिस आल्सो. 1, ओके, दिस हैंड, 2, use the wrist only and back side, same. Now for some more challenge, the exercise number 1, 2 and 3, that is the standard rotation like this, and the underhand rotation, and also the double hand circle making kind of action. You can do it something heavier like a barbell or something like this. अगर ये आपके घर पे नहीं, कोई बात नहीं, एक बड़ा सा लट्ठा लीजिए, मतलब something which is more heavy, जो थोड़ा सा ज़्यादा thick भी हो, so it is challenging for you to grip, and that will increase your strength in forearms and gripping power. We will do the same exercises with the barbell. See, just try. 1. This is the standard forward rotation and the underhand. We can combine this like this. 1. Right? Woo-hoo. Woo-hoo. Be careful also. Okay. कोई बात नहीं, आज कैमरा के सामने बेइज्जती हो गई. ये देख, underhand and from here like this. 1 and 2. You have to make sure that your hands are more stable and most of the work is being done by the wrist. Then only you will get that effect in your forearms, right? Yes. Use it. And the next one, very simple. We are going to do that. It won't look very good because it is heavy. See, the third exercise. Yes. 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 Ooh.
using a dumbbell or anything heavy, maybe bada wala danda या फिर something else, mace you can use a barbell. Just grip it like this straight. Use a support with a stool or something. Placing is always like this, not over here, like this. बहुत आसानी से अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से grip छोड़ देंगे so that all the weight comes towards the finger. You can see it is rolled out and slowly roll in. And then this final one is also important. From here you do this and back, and 2 and 3 and 4 6 7 ऐसे करिए, 10 करिए, 20 करिए, जितना भी हो सकता है करिए. दोनों हाथ में करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. So both hands you can do this with both hands. 1, roll down, roll up, roll down, roll up, and 2 and 3. Use something heavy, कुछ भारी सा लेके ऐसा पीछे, hands are straight and not like this, like this. Lean slightly backwards and the same thing, roll out and roll in, roll out and in, out and in, out and in. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Always finish with double stick rotation, standard forward rolls. Very simple. Yes. And you can start with standard underhand, actually not rolls. हाँ पहले मैंने roll बोल दिया था, roll नहीं होता. It is actually rotation. You can call it rotation. Like this. Yes. Woohoo! Do this. Try for 30 seconds. अभी मैं इसी को काट के फिर से दिखा दूंगा तो 30 सेकंड हो जाएगा. It is nothing. You have to understand the motion of your forearm muscle. मतलब यहाँ से ऐसा ऊपर करेंगे तो उस मसल के मोशन में जिस एरिया से, जिस तरीके से, द मैनर इन विच द फाइबर्स आर कनेक्टेड, भगवान ने जिस तरीके से लगाया उस डायरेक्शन में आप उसको यूज़ करते हैं तो वो मसल का यूज़ होता है, वो मसल एग्जॉस्ट होता है और धीरे धीरे वो मसल डेवलप भी होता है. सिर्फ मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो ये सारे मोशंस कर सकते हैं. जैसे फॉर द बाइसेप यू हैव टू डू लाइक दिस, राइट. बट you can go for a holistic development of strength, flexibility and everything in the forearm if you do some kind of martial art kind of movements. मतलब ये लाठी घुमाना, double stick, और you can do the same things like traditional exercises. इसमें क्या होता है, पूरे का पूरा आपको चिंता नहीं करनी ये कितनी बार किया है, कितनी देर कर रहे हो, कितने वजन से कर रहे हो. You don't have to worry. It is like body weight exercises. Just take a weapon and start the rotation. If you want to learn how to rotate the stick, I have made a video. Yes. स्टिक रोटेशन, लाठी रोटेशन का वीडियो बनाया है. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. यू कैन लर्न दैट एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट फोरआर्म वर्कआउट. Karate TV online classes are already started, so you can fill the form in description. I will give the link in description. Fill that form, register करिए and you can join in the virtual karate class. It is actually based in the martial art of karate. Based in the martial art of martial art of karate. Sorry, martial art of karate. But जैसे हमारे वीडियोस होते हैं कराटे से कलरी, कलरी से मतलब कुश्ती, हम बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस आर एक्चुअली इंडियन एक्सरसाइजेस. So no problem, but it is also authentic Shotokan Sangokai syllabus. So you get everything. And there are 2 बैचेस मॉर्निंग एंड इवनिंग. और उन सारी जानकारियों के लिए आप लिंक में मतलब दबाना पड़ेगा और उधर से फॉर्म भरना पड़ेगा. रही बात फोरआर्म की, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब एक चीज़ आप मार्शल आर्ट वाला कोई भी मूवमेंट आप सीख लें और उसके बाद इट बिकम्स वेरी ईजी. आपको अपने घर वालों के पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं, बड़ी बड़ी मशीन से कुछ भी से. यू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ द मसल वर्क्स एंड देन यू कैन वर्क आउट विद एनीथिंग. हाँ, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. हाँ.